हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिदम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर ग्रीडी एल्गोरिदम्स। सो ग्रीडी एल्गोरिदम्स सिंपली आर एल्गोरिदम्स which uses the greedy technique to solve the problem. Okay, algorithms which uses greedy technique or greedy approach to solve the problem. अब next question आएगा, what is greedy approach? So greedy approach is basically, so let me first define it, then we'll understand it line by line. Greedy approach is a problem solving technique in which at every step we select the best looking choice among the available choices at that moment of time. And so we keep on selecting the choices and build the solution. Okay, so greedy approach is nothing but what? It is a problem solving technique in which we select the best looking choice or the best seeming choice among the available choices at that moment of time. At that moment of time. Okay, so basically let's say आपके पास n आइटम्स है और इसमें से आपको k आइटम्स सिलेक्ट करनी है और सम आइटम्स सिलेक्ट करनी है एंड यू वांट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज समथिंग लेट्स से। ओके, तो आपको n में से कुछ आइटम्स सिलेक्ट करनी है. So what you do is that at every step you select the best seeming or best looking choice available at that moment of time. जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि कोई पर्सन ग्रीडी है, इट मीन्स व्हाट, वो पर्सन इस मोमेंट में किस चीज़ में प्रॉफिट है उसका सोच रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा. अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में है, राइट? So the similar is the greedy approach. Out of the n items available, let's say I have to pick some items. Now depending upon the question type, the number of items to be selected might be fixed or might not be fixed, and we are trying to minimize or maximize something. So सबसे पहले मान लो मैंने एक आइटम ली I1, तो ये I1 आइटम जो होगी वो ये n आइटम्स में से बेस्ट अवेलेबल चॉइस होगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. what are the parameters that I have to keep in the mind. Depending upon this, n में से बेस्ट चॉइस अवेलेबल कौन सी है, तो लेट्स से इट्स दिस आइटम, वी चोज इट. नाउ रिमेनिंग n-1 आइटम्स में से नेक्स्ट बेस्ट चॉइस कौन सी है, लेट्स से इट्स I2. रिमेनिंग n-2 में से नेक्स्ट बेस्ट चॉइस कौन सी है, लेट्स से इट्स I3 एंड सो ऑन. लेट्स से वी पिक p आइटम्स. सो ये n में से हमने p आइटम्स का सॉल्यूशन सेट बनाया. और किस तरीके से बनाया? एट एवरी स्टेप आउट ऑफ द रिमेनिंग अवेलेबल चॉइसेस हमने बेस्ट लुकिंग चॉइस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट ग्रीडी अप्रोच. ऑफकोर्स जब क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा. ठीक है, नाउ these questions are solved and decided by intuition. okay, so जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ग्रीडी अप्रोच के, तो आपको एक इंट्यूशन आ जाएगा कोई नया क्वेश्चन देख के कि ओके इसमें ग्रीडी अप्रोच यूज़ हो सकती है. ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन सेट बिल्ड करना है, आपके पास n अवेलेबल चॉइसेस है, कुछ पैरामीटर्स है क्वेश्चंस में दिए हैं, आपको कुछ मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. तो आप जो है इन n अवेलेबल चॉइसेस में से सबसे पहले बेस्ट सीमिंग चॉइस डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस थिंग्स सिलेक्ट करेंगे. फिर रिमेनिंग चॉइसेस में से बेस्ट अवेलेबल चॉइस सिलेक्ट करेंगे. फिर रिमेनिंग चॉइसेस में से बेस्ट अवेलेबल चॉइस सिलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस n ऑलवेज डिक्रीजेज. ओके, कि एक चॉइस ले ली तो अब n-1 ही है. इट a lot of factors depends on the question. For example, आपको कुछ एक नंबर फॉर्म करना है and the available digits are from 0 to 9,
तो आपने एक बार 7 ले लिया तो ऐसा थोड़ी है बाद में वापस 7 नहीं ले सकते, राइट। सो आपका अवेलेबल चॉइसेस एट एवरी स्टेप क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट करने हैं, वो फिक्स है या नहीं है, राइट। व्हाट डू यू वांट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ऑल दिस थिंग्स विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, बट द कॉमन अप्रोच इज out of the available items you select the best choice at every step of time, and in that way you build up the solution set. This is greedy approach. Okay, एंड हमारे लेवल पे हमको इसमें थियरी या एज सच नहीं समझते. दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय इंट्यूशन, देयर इज नो सच थियरी इन्वॉल्व्ड. ओके, जैसे जैसे आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा. ओके, दिस कैन बी सॉल्व्ड विथ ग्रीडी अप्रोच. ओके, now can all the questions which ask to minimize or maximize us be solved with greedy approach? No, because अगर आप अभी बेस्ट चॉइस अवेलेबल क्या है इसको ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप पे चॉइस करेंगे तो ये हर एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आपको सही आंसर दे ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा. जैसे हम आगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताऊंगा कि ये ग्रीडी से सॉल्व नहीं हो सकता कुछ क्वेश्चंस, राइट. सो आई विल टेल यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ सो ग्रीडी की डेफिनेशन हो गई, ये इंट्यूशन से सॉल्व होगा. बट डू वी हैव एनी क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड? यस, वी हैव अ क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड. व्हाट इज द क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड? सो बेसिकली आपने एक सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए, ठीक है ना, आपने n में से 1 by 1 बेस्ट अवेलेबल चॉइस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम सिलेक्ट कर करके अपना सोल्यूशन सेट बनाया, ठीक है. अब क्या ये आपकी अप्रोच सही है कि नहीं, क्या आपका सोल्यूशन सेट ऑप्टिमल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो वन ऑफ द वेज ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन इज आपने जो भी आइटम्स सिलेक्ट की है, ठीक है ना, दिस इज योर सिलेक्टेड आइटम्स. ओके, एंड these are the other choices which you could had, ठीक है. So can you so let's say there are some selected items, okay, while you were building the solution and there were some other choices available. So can you remove, आपने किस तरह से ये solution set बनाया है? by taking the best solution available at every point of time. So can you exchange one element from here with one element from here and make your solution better? Can you remove an element from the set of selected items and take an another item in place of that item from the other choices which you had and make your solution better? Okay, so can you remove an item from the selected items and replace it with any other choice available and make your solution better क्या आप solution better बना सकते हो? ठीक है. If the answer is yes, then your greedy approach is not correct. जो आपने greedy approach लेके जो आपने solution set build किया है वो सही नहीं है, because you can replace that item with some other available choice and make your solution better. Okay, whatever you want to minimize or maximize something, you can make it better. If the answer is no, that it cannot be done, then your greedy approach is correct. Okay, of course इस वीडियो में हमने बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें डिस्कस की, कुछ पॉइंट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर ना हुए हो. नेक्स्ट वीडियो से जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी भी उसमें अप्लाई करेंगे एंड कैसे हम हर एक स्टेप पे बेस्ट अवेलेबल चॉइस सिलेक्ट करते हैं, कैसे ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करते हैं वो देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.